मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर द टच क्लिनिक मोहाली। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट, रोबोटिक सर्जन एंड एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी से भी डील करती हूँ। आज मैंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है कॉस्गाइनी 25, जिसमें पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं। मोर देन 250 गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं और इसका जो थीम था वो था लेटेस्ट एडवांसेस इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। माननीय गवर्नर सर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। श्री गुलाब चंद कटारिया जी आए थे स्पेशली और उन्होंने सबको बहुत प्रोत्साहित किया था। और इसमें जो हमने मेनली डिस्कस किया है वो किया है कि क्या क्या लेटेस्ट एडवांसेस गायनी और ऑप्स के फील्ड में हो रहा है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, फिर एंटी एजिंग पे बहुत काम हो रहा है कि हमारी एज रिवर्सल कैसे हो। लेडीज में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि अगर जब उनकी एज बढ़ जाती है, मीनोपॉज हो जाता है, तो वजाइना ड्राई हो जाता है, खांसी वगैरह करने से यूरिन निकलने लगता है और इनका कोई ट्रीटमेंट पहले अवेलेबल नहीं था। पर आजकल एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे लेजर हो गया, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, हाइफो हो गया, जो बहुत सेफ हैं और टोटली पेनलेस होते हैं और इनसे ये तकलीफों का में आराम पाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस की थी। PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक्सोसोम से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी में अगर आप इन्फ्यूज करो तो उसकी वजह से आपके जो यूट्राइन कैविटी है वो बेटर हो जाती है, तो IVF में हेल्प करता है। फेस में PRP करने से स्कारिंग कम हो जाती है और एंटी एजिंग पर बहुत काम किया हो रहा है। 25 साल की उम्र के बाद एजिंग शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे कोलेजन्स और इलास्टिन फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, तो उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ये भी हमने इसमें डिस्कस किया इस कॉन्फ्रेंस में। इसकी उपलब्धि आपके के लिए और देश के लिए आज सबसे बड़ी उपयोगी साबित है। तो मैं सोचता हूँ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो गांव में जो डिलीवरी होती तो भगवान भरोसे से हो जाती, कभी ठीक हो जाती, कभी ठीक नहीं। और इसके कारण से मैं सोचता हूँ कि जो पीड़ा अनुभव होती है हर परिवार को, वो आपके भरोसे कम होता है। अब उसके लिए योग्यतम डॉक्टर तैयार करना कि हमने नई पीढ़ी के डॉक्टरों को भी सम्मानित किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रतिभा की देश में कमी नहीं, प्रतिभा को संजोना और उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना। मैं सोचता हूँ कि आपका ये छोटा सा सम्मान समारोह उस बच्ची के मन में, उस डॉक्टर के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करे कि अगर हम कुछ प्रयत्न करें तो इस रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं और सम्मान भी पाते। सम्मान तो एक का होता है कि बाकी सबको भी अनुभव होता है कि अच्छे काम करने वाले लोगों का समाज बहुत आदर से सम्मान करता है। और डॉक्टर के तो सम्मान मैं सोचता हूँ अगर उसमें करुणा है, सेवा है, दया का भाव है, परिवार का भाव है, तो उससे बड़ा और कोई व्यक्ति नहीं मानता। With me, there is Dr. Ayman, who is a world-renowned. He has come from America and he is world-renowned cosmetic gynecologist. And Dr. Fatima, she has come from Abu Dhabi. She is a very senior gynecologist with special interest in laparoscopy and cosmetic gynecology. So this conference is basically about what are the latest advances in ops and gynae and आजकल फीमेल हेल्थ के लिए क्या क्या लेटेस्ट टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं। सो रोबोटिक सर्जरी इज वन थिंग जो हमने पहले भी कवर किया है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत नए तरीके से आ रहा है। और एक एस्थेटिक गायनेकोलॉजी होता है जिसके अंदर फीमेल्स की प्रॉब्लम, जैसे कि उनको खांसी करने पे यूरिन लीक होना, वेजाइना ड्राई हो जाना, एज द एज increases the vagina becomes dry, that is known as genitourinary syndrome of menopause. In cases में there is no treatment otherwise, the women are told कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये एज के साथ ऐसे ही रहता है, पर ऐसा नहीं है। बेसिकली these are unspoken problems of women एंड आजकल इनके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पेशल तरह की चेयर होती है, हाईफेम चेयर, जिसमें एक वुमेन को बैठना होता है आधे घंटे के लिए और वो पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। देन देयर इज समथिंग नोन एज वेजाइनल लेजर,
सो लेज़र्स हम काफ़ी टाइम से करते हैं और इन लेज़र्स को इस नॉर्थ इंडिया में मैंने इंट्रोड्यूस किया था 10 साल पहले और तब से बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। जैसे हम स्किन का लेज़र करते हैं वैसे ही वेजाइनल म्यूकोसा का लेज़र करते हैं। इसमें 2 मिनट लगते हैं और कोई पेन नहीं होता और फीमेल को जो जैसे प्रॉब्लम हो रही होती है कि उनको ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, पर वो एक्चुअली यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है, वो बेसिकली ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यूजुअली होता है लेडीज को मीनोपॉज के बाद 45-50 की एज के बाद। देन देर आर फ्यू थिंग्स जैसे कि एंटी एजिंग, आजकल एंटी एजिंग पे बहुत काम हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा डेथ बाय चॉइस, कि जरूरी नहीं है कि हम सबको मरना ही है। दिस इज द लेटेस्ट एडवांसेस विच आर हैपनिंग इन द फील्ड। एजिंग, एंटी एजिंग के बारे में थोड़ा सा डॉक्टर आयमन आपको बताएंगे क्योंकि ये इस पे बहुत काम कर रहे हैं। The definition of health now is complete physical, mental, social, and sexual well-being, not merely the absence of disease or infirmity. By 2026, in India, we're expecting over 100 million menopausal women. These women have a lot of living to do, 40 to 50 years after the onset of menopause. So addressing the health issues with these women, including stress urinary incontinence, vulvovaginal atrophy, interruption of their normal marital relationships, as well as vaginal relaxation syndrome, is part of complementing the health of this particular group of patients. Health is not only absence of disease, but health lifestyle. Aging, as everybody think, is a natural phenomenon, is actually aging is not. Aging is a disease, not different than any other disease. And in the United States now we have a new era of medicine called the senolytic medicine or age reversal medicine that will be the future to address the issues causing aging and causing deterioration of the human function. By science, humans should live much, much longer. Remember, humans lived on Earth for 6 million years. Everything you take for granted, including electricity, airline travel, computers, and your iPhone, happened in 100 years out of 6 million. So with the introduction of AI and so forth, and with the help of people like Dr. Jindal and her endeavor to disseminate the knowledge amongst Indian physicians, we are very proud to be part of that. And I thank her for inviting me from New York. Thank you. Now Dr. Fatima will speak something about the energy-based devices and developments in gynae. She has come from Abu Dhabi. First, thank you very much, Dr. Preeti, for this invitation to India. I would like to say, coming to India means exchanging knowledge, because what I believe in India, you have really advances in laparoscopic surgery, especially in gynae. And I found today also that you have a lot of machine which is made in India and medication that we used to export from outside the United Arab Emirates and with great difficulty. I found today that you have all those medical companies. My expertise or my interest actually is in gynae, and there is a big bunch of lectures where there to cover those topics in younger age, like adolescent, tackling PCOS from health-wise and cosmetic point of view, in addition to a problem they are facing with adenomyosis, endometriosis, which will disturb their lifestyle, causing pain, anemia, and a lot of problems that we believe sometimes that there is no other treatment except surgery. So in this conference, we tackled those, and we went also in detail of robotic surgery, laparoscopic surgery, and doing hysterectomies and other problems. You wanted us to talk about the devices? Yeah, cosmetic? Yeah. In cosmetic field, the devices will help a lot, because you know that patients sometimes not really happy to go for surgery, or their case does not demand surgery, but they can have some benefit from going through some devices that can help improving their stress incontinence, pelvic floor strength, other symptoms like laxity, improving the sexual health also, like we are having the laser machines, radio frequency. Also we use a specific type of like a chair where she will sit simply and have some
effect on stress incontinence or pelvic floor laxity that improve a lot of symptoms she's suffering from. Along to that, there is some intervention that's done in cosmetic also have therapeutic effect. For example, plasma, fat. We were talking today about fat also injection, which will help a lot in stress incontinence. Some element of the pain, dyspareunia, atrophic vaginitis, postmenopausal patient. It's not always a medication. Sometimes you can do an intervention that is not surgical on the same time. It does not take a really long time to find the effect and does not need repeated visit to the clinic more than what they can tolerate to have a better effect. Yes, so basically, this conference had more than 250 faculty and delegates from all over India and abroad. We had foreign delegates from America, from Saudi Arabia, Dubai, and from India we have from everywhere, right from Srinagar till Kerala and Assam and Jaipur, everywhere. So all these are senior doctors who are doing a very good practice and they are working a lot for women health. So here they came to exchange the ideas about what all are latest in the women health care. So what are the latest? One is the robotic surgery. Second is the vaginal energy based devices like laser, HIFU, ultrasound devices, HIFIM. Third, anti-aging drugs, so reverse aging, how we can stop ourselves from aging, what all can be done. Then a very big session was on anti-obesity, because obesity is now considered to be a disease, not a disorder. So how to tackle this obesity, and आप सबने सुना होगा many new drugs have come, Mounjaro, semaglutide or Zempic. So how safe are they to use? What to be used in which case? So these sessions were also there. Then what are the latest advances in radiology? So it's a very high-tech conference, basically to discuss what is latest available in the women health care. So this was the purpose. Also, there is a workshop, as just reminded to me by Dr. Fatima. Yes, we are doing a hands-on workshop on 16th, and that is basically to teach the young students, the young gynecologists, about laparoscopy, hysteroscopy, colposcopy. These are diagnostic things. For the colposcopy helps in diagnosis of cervical cancer at a very early stage. Then hysteroscopy is scopy of the uterine cavity, then how to do it to see the lesions, laparoscopy, how to do laparoscopy, and also hands-on training on the aesthetic cosmetic gynecology, means what all devices are available. All these devices are very good, but you need to learn about them. So, and these devices are not available with every medical college or every place. So most of the graduates have not learned about it. So we are doing a workshop. There is participation by the PGI, by GMCH, other medical colleges of North India. So everyone, all their heads have come to discuss the ideas, to learn few things, to teach few things. So that's why this is a very important gynaecological conference. So we have lots of conferences happening, but then this is unique because this is a specific gynecological conference to discuss the latest advances in the female health, which are available around the world today, and anti-aging, and latest in the AI medicine. So this is all which we are discussing in 2 days. It's a very extensive conference, so we are discussing this. Anti-aging has many components. So what you are talking about are the IV drugs and all, which if given unsupervised then can lead to complications. As I said, any compound which is not learned properly, even these devices, if not learned properly, can lead to complication. And that's why this conference is there, so that the doctors, the young doctors, and even the practicing doctors, senior doctors also, who do not know about these newer techniques, can learn about it and practice the safe medicine.